or maybe not audible. Sorry. My bad. Okay. I guess I mistakenly went on mute. Okay. Sorry. I'll start again. I'll start everything again. So नहीं the अभी म्यूट कर दो, you background. can continue sir. Okay. अभी म्यूट हुआ था क्या? Okay. गलती से हो गया रहेगा मेरे से. Okay. Ronak ji, I will request Ronak ji to record the session so that जो attend नहीं कर पाए हैं, they can view the same. I guess this is a recorded session. This is started recording. Okay, fine. Yeah. Okay. Ronak, please loud. Please loud. Can you hear me, sir? Hello. Yeah, clearly. Sir, आपका volume increase कर लीजिए laptop का. We can hear him very clearly. Yeah. No, I'm on my Bluetooth earphones. नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा है. Continue. Okay. So as I was saying, the features that are covered, like it's a web-based application. So it's a web-based application. So it is available 24/7. Okay. You just need to have an internet connectivity and you can log in from anywhere, and you can file your custom transactions or admin transactions and submit to the DC or custom office. Okay. It has a maker checker concept. So unit maker creates requests and the unit approver authenticates, verifies the request created by the maker, and through the DAC it authenticates that request. So the authenticity of the request, each and every request is maintained. Okay. We have inbox and search functionality. Okay. Users can also see the status history of each and every request. So let's say after a submission of the request, and user would like to know what is the status, what is the current status, or what is the process it has gone through. So there is a status history available. So users can check that. There are reports functions available in the each and every login, like maker has a report, unit approver has a report. We have file upload facilities. I will show that in some time. Facility to attach documents, basically whenever you submit a request. So it is required that you upload PDF like invoices, packing list, examples. I'm just giving an example, or an Excel sheet. So we have a facility where you can upload such documents. And and this system is also updated latest trade notifications like exchange rates, you can say, or notification. So every notification, the custom duty rates that will be changed in by the custom officers, it is updated in Sales Online the very next day or the very same day. So these features I will in the later part of this session I'll show you. We'll also be able to understand more clearly. So here is just a small snippet of how a NUI application, your new unit application workflow goes. So the new unit applicant submits the application, it goes to the DC initiator. So at the DC end, there are 3 levels of hierarchy. Okay, there are 3 levels and the request moves through all these 3 levels, and then after the 3rd level, it is verified. It is approved. When your application is approved in Sales Online system, your registration application is approved in Sales Online system. So this is just a small workflow that shows you how the workflow goes. So the first, after submission of your NU application from DC, from yourself, it goes to the DC initiator. If there's any deficiency, the request goes to the DC verifier, and then the DC verifier marks the deficiency against the unit. And then ये तो बीजा में नाखी છે ને પણ એ આમાં નથી ને લેજરમાં અલગ જોડે Sir, નાખી mute. છે અલગથી નાખી છે ને Sir, I'm mute. Can you mute everyone other than yourself? Can you mute everyone, because otherwise disturbance will come like this only. It's not with me. It's not, the control is not with me. Prakash, can you mute everyone, please? You already muted. Done. Okay. Yes. Thank you. So this is after the deficiency has been resolved, it goes to the DC verifier again. He verifies it. Then it comes to the 3rd leg, that is the DC authorizer. So DC authorizer, once the DC authorizer approves this request, your LO is authorized, and then
an intimation goes to the unit to accept the LOA. So this is how a workflow happens, a small workflow happens of your registration application in SES Online. So each and every transaction that you file, your SCRF, your LOA, your LUT, they go through the similar kind of workflow in SES Online system. So let's say your application has been approved, your LOA has been granted, it is there, and now you have to now you have to further come into action like you have to file SCRF, and before filing SCRF or any other transactions, you have to follow certain validations. Okay. After your registration is approved, the first thing that you have to do is you have to make registration fee payment to SES Online system, to us basically. Okay. That consists of one-time registration fee, your annual maintenance charges, and then top up if you want to. Okay. So once this registration application is approved, your fee is approved. Uh, then comes the option of creating further users. Okay. Till now you were only having applicant user ID. Now you are going to create further users who are going to act as a maker, approver, and also as an admin. Okay. So here you can see unit gets an option to create that applicant user ID as an admin user ID. Okay. The function of an admin user is just to manage operations or create users, give them role, give them functionality. I'll also cover that how user management in later part. Okay. Here over here, I'm just summarizing what it is. Admin user does not process any request. It just creates users, give them functions, and manages. That's it. Sorry. Maker user creates a request. A request like it can be admin applications like LOA, LUT, your freeform applications of DCP intimation, broadbanding, such applications. And then once the maker submits it, goes to the unit approver, and the unit approver verifies the request created by the maker and authenticates it with the DAC. And it submits to the further, like based on if it's an admin transaction, it will go to the DC office, or if it's a custom transaction, it will go to the custom office. CHA user is basically optional. It is basically towards manufacturing unit. You can ignore this part. You can ignore this users. Okay. From the admin, so another functions of the admin is you can unlock users also. If suppose a particular user has resigned from an organization, you can disable his user ID. So you can protect that person does not file any other transactions. So you can disable that user. So disabled users cannot be enabled again. Okay. You can even lock and unlock a user, particular user, and reset password. Obviously, if any maker or approver has forgotten their user ID and user password, so you can the admin ID can reset the password for them. So coming to the next part. So once you have created, once you made the registration fee payment to us, you have created your admin ID, you have created maker and approver also. Then comes certain validations in the system. One of the validation is to accept your LOA. Okay, so as we saw in the two slides before that your registration is approved and LOA is sent by the EDC office for acceptance. Okay, you will have to first accept your LOA from the unit approver ID, and then the second validation starts. That is to update your GSTN. Then there is a third validation where you will have to also initiate your LUT. Okay, and then there's a fourth validation where you will have to capture your SEZ address, that is your lease deed address. So the function to submit your lease deed comes into this picture. Okay, so once you have completed this four validation, then the system allows you further to file transactions in SES Online.
Uh, Now let's say you have your LOA period completed, 5 years, okay, and you want to renew your LOA for the further 5 years period. So we have an alert mechanism in this as online sys- uh, where the system will keep sending you alert for 90 days prior to you that your LOA is about to expire. It will display it in your login. It will even notify you through emails. So at 90, believe that 90 days is a sufficient time for a unit to act to get their LOA renewed with the DC office. Okay, so in case if a user has missed this deadline due to various reasons, okay, there is still certain way that they can get the access and file the application again. That is temporary LOA extension. So with this function is available with the DC office. The DC office can give you a temporary LO extension, and that temporary you will be able to file your normal transaction. Plus, also you will be able to complete your LOA procedure, LOA renewal procedure. LUT enhancement is just a module called LUT detail submission. Basically, it is if you have a already valid LUT and you just need to uh, upload it in SaaS Online, you can just upload the details, submit it, and it'll go directly to the specified officer. And once he approves it, your LUT details will be updated in the system. DCP intimation and acceptance. This is a very important part. Okay. So as I said, once you have completed the 4 validations of accepting the LOA, mapping your GSTN, updating your LUT, and your SEZ address through lease deed. Okay, once you have completed this 4 validation and you want to commence your activity of your export, first export. So DCP intimation, there is an application in your free form. It's a free form application. You will have to file and submit this application from the maker to approver and further to the DC office. And once the DC office approves it, your LOA will be extended automatically for 5 years. I will show you the link where it is, how you can navigate it and submit it. So these are the various modules that you have covered in SaaS Online System till now from 2010 to today. The admin part is in unit applications, bond LUTs, LOA. On the left-hand side are custom transactions, bill of entry, shipping bill, DT. So for manufacturing units, these are. So as I was saying, there are many free-form applications that a unit can file. Say, for example, DCP intimation form. So that form is available in your administration application. Then permission for if there are any IT units who want to do DRBCP activity and they want to have a permission required, so they can file that. IEC RCMC application. Broadbanding of request is a capacity enhancement is also available in the same. So these are all the applications which are available. So now moving ahead, one of the important function let's say module which is to be filed by the GIFT SEZ unit, IFSC unit is service export reporting form. Okay, so in this reporting form, you can cover your software exports on-site, off-site, royalty, services. This monthly, this SCRF has to be filed by 10th of every month. So kindly make sure that by 10th you have this SERF submitted to the DC. I'll show in detail each and every application. I'll show the screen also. So this is just a small photo of how the screen looks.
in the later part of the session, I'll cover that also. You can just view it right now. Just on the first image, you can see that it is a general detail. Your general detail which you have captured by the time of registration, that detail is there. The reporting month is if you're the month which you want to submit yourself, you get to select it from a drop down option and then you can submit. Your in the second image is the same what you have captured in your registration. The same details are captured your auto populated basically. And in the bottom, in the summary area, is the information that you've captured in your SCRF. It is there in the summarized format. And then the third image is just a small declaration. This is how the print looks. Okay. First image is correct. The first image just carries your general information. In the second, information is summarized based on your service code. Okay. And the value of it and number of invoices in that service code. And in the third image is a small declaration. Softex is also there available. So you need to want to have who are filing Softex can file Softex in SEZ online system. They don't have to worry about Softex numbers to be procured from RBI. But system we have already have a discussion with RBI where we generate the Softex number and they accept it. So you can the Softex number generated from SEZ online system are accepted by RBI. And say for example your Softex is certified today and the data is immediately shared the next day with RBI, and further, I think the next day it is shared with the bank. So the transmission is very easy, it's smooth. So units need not worry about your Softex not being shared. If at all there is a situation that comes, you can report it to us and we can solve it. That's not a problem. But there's no such issues with that. It is completely automated. So once certified, it will automatically be shared with RBI and further with the bank. Secondly, if at all you have submitted any Softex and if there is a situation arise that you need to cancel a particular Softex in that Softex request ID, there is a provision for that also. But provided that that Softex needs to be certified first. Okay. So a cancellation module is also there. You can cancel that particular Softex number also from that Softex request ID. Now coming towards reporting forms, basically, let's say annual reporting forms or monthly reporting forms. Okay, so APR is your DC would like to review your performance every annual basis. Okay, so they would like to know the net foreign exchange that you are getting in and everything. So the provision for this is that you have to submit this APR form. It has to be certified by or digitally signed or authenticated by a chartered accountant, and it has to be submitted before September of the current financial year. So your last financial year, let's say for example 24 24-25 example, I'm just taking as an example 24-25, your annual performance for 24 and 25, units are requested to submit this reporting form to the DC by September 2025. That is the second quarter of the next financial year. Okay. Your again, I'll be going. I take you through the various tabs that are there and what information you have to capture. Apart from that, there is manual also available in a download section where users can understand easily what are each and every options, what are the each and every points in APR, okay, and how it is calculated basically. Monthly performance report is simple. It has to be, it is just covering your investment details or employment details.
and it has to be filed before 4th of every month. Okay. If at all, if you miss this deadline of filing of by 4th of every month, system will automatically take previous data to consider and consider the previous month data. But if at all, if you want to make any changes to that month, the system still allows you to make changes for the last 3 months. There's a provision where you can amend data for last 3 months, but any prior to that, you cannot. This is a simple custom transaction DTA procurement. So, say if you have set a you have made a you have set it. There's a unit setup that has happened. Okay, so you want to procure furniture, computer accessories, laptops. Basically, you want to procure it from your domestic market. So when you're getting in, you have to file a DTA procurement that states that this is for the office use. So again, this request is created by the maker and then approved by the unit approver. Units bringing in assets for their office purpose have to file DTA procurement. It is a very simple, it has got general details, it's got invoice detail and the items that you're bringing. There is a provision if there are multiple items also, there is a item upload facility where you can upload single and multiple items. Sorry. This is how the print format looks. Basically, this is the general detail. This request ID starts with 29. Acha, with request ID, I just realized. Okay. So whenever, let's say you have an issue with a particular request ID, or if you have a particular with any module, there is a request ID, unique request ID generated each and every time. So whenever you want to report this issue with us, SEZ info with us, basically, please make sure to type in this request. Also, if it'll help us to easily understand what issue that you're going through. Also, it would be much better that if you add your entity ID also. So every unit who registers in SEZ online system has a particular unique entity ID mapped to it. So these two things are very useful for us to help you out. So just note it. It's just a small tip that I just realized. Okay. So again, this is this part is the basic information. In the middle part, you can see is your invoice and item details. The invoice that the invoice number and the item that you're procuring from the domestic market. And then there's just a small tabular information for IJC details. Now, this is another important model that we have introduced is domestic service procurement. So, in the previous module, DTA procurement, this module is used for when you're putting in goods and services, when you're procuring goods from the domestic market. So there can be instances where where you take services from a domestic unit. So there, this form comes into picture, DSPF, domestic service procurement form. Okay. I will show this macro. I will show the demo of the SEZ online website. I'll also cover that. So let's say you are procuring services from a domestic market and for example, I can tell you that SEZ online itself is a service we are giving to SEZ units. Okay. So say for example, we give you invoice of you made a registration with us, we give you an invoice for that. You can mark this invoice in this DSPF form. So this is a service. This is just a export benefit form. It's not so important. It's just there. It means goods procured from the domestic market
for export purpose. So people who units who procure it from the domestic market for export purpose, they can file this form, domestic procurement with export benefit. Uh, okay, so I'll just cover the demo. I'll just, can you see my screen? Yeah, it's there. Okay. Uh, okay. So this is just a pilot environment, and this is just a replica of the production website. Okay. This is your user login area. So users are supposed to log in from this. Hello. Hello. Yes. Priyanka. Hello. Okay. Sorry. Hmm. So this is the login area. I'll first take you to the admin ID. I'm audible, right? Yes. Okay, thank you. Uh, just a minute. Huh? So first I'll show you through the unit admin and give you a outlook. That'll give you an outlook how an admin looks and what function it has. So on the left hand side, you can distinguish the features, the links that are available with the admin, with the maker ID and with the approver ID. Okay. So based on the left hand side links that are there, you can, it's very easy to understand who is the maker and who's the approver, who's the admin ID. So as I said, once a registration has been completed and you get an option to create an admin and you have created an admin. So you have a further role to create, that is maker and approver. You log in from your admin ID, you go to administration, maintain unit users. Also, yeah, whenever system asks you to verify your email ID and mobile number, please do not enter junk information because this information, the email verification or the mobile number verification, helps in sharing OTP to you. Okay. So please do not enter junk data or junk information because that will not help you when you want to reset a user ID or you want to verify a particular login. Okay. You get an option. You can, if you have an existing user, you get an option to select from the drop down. If you want to add, you can just go to add, type in the user ID that you want to. Make sure you upload your PAN details and your photo details. Just a minute, okay? Your photo. Okay. Your birth date. So units who have got a users who have got letter of authorization. Okay, you can upload this. You can upload that also.
your employee ID if you want. Here you get the function unit maker approver. Okay. And CHA part you can ignore, as I said. We can just focus on admin ID which is already created. Now you want to create a maker ID and a approver ID. So you will first create a unit maker. This is the function. You want to give them the functionalities. You want to make sure that you give them these functionalities. And you also have to make sure the functionalities that you give to the maker is the same functionality that you're giving to the unit approver. Okay. The reason why I'm saying is because if at all you miss out in giving a function, say you have given a function to the maker but not to the approver, the request will not go to that approver's inbox. Okay. So you have to make sure that the functions that you give to maker, you have to make sure that the function is available with the unit approval also. So for IFSC units, you can see default option SCRF is there. So by the time of when registration, if you have selected IFSC, okay, system will automatically mark it as unable and disable this function. So you don't have to worry that whether you're giving them this function or not. Okay. Maker does not require a DSE, so you can skip this part. You just have to select the declaration. And sorry. Okay, I guess. Okay, so I successfully created a maker ID. In the same way, I can create an approver ID. One more thing I would like to add is that DAC which you add to one, but say for example there are two unit approver in your account, in your admin ID, in your unit. You cannot keep the same DAC to both of the users. The DAC would also have to be unique. There's a validation in the system where it will not allow you to attach the same DAC serial number to both the user. Wait a minute. Okay. Mm, I select the unit approval and then give them the functions. I'm not using a mouse, that's why it's taking a little bit time. So mouse it can be a little faster.
And you go to add the assign DSE. I'm just showing this option. I'm not going it further. So every DAC that you get, there is a serial number attached to it. For example, you can go to your setting, you can go to you can search certificates. A pop-up will come, a pop-up window will come, and displaying your certificate. You can go to the security part, certificate part. You can go to it'll display your DAC certificate, and if you click on that, under details, there'll be a DAC serial number. Okay, I'll just show you if I have certificate. Manage certificates. Okay. For example, I double click on this. You go to the details part. Okay. Serial number. You have to copy this as is. If there is space, don't put the space. Just type in the number or you have to. This is a serial number and you have to capture this. And we have all the certifying authorities which are there in the market right now. It is updated in the system. So if at all if there is a certain new certifying authority and it's not there, you can write an email to us stating the same, and we can cross verify and update it. That's not a problem. That won't be a problem. But most of every certifying authority is there in this list. You'll have to capture the details of your certificate, like the option which I just showed you where the serial number is. You can just capture that, upload the file, select the declaration and submit it. I'm not going ahead because I don't have the DSC right now with me. So this is the function of user management. Okay. If at all you want to, sorry. We have edit profile also. Each and every user role has an edit profile. So say they want to change a name, it is possible from edit profile also. Just a minute. So if I click on edit, I get to change the phone number and everything. I can only edit this part. In administration, when you go, if you just click on search, all the users which you have created can just appear in a tableau form. Okay, you can select any one user. You can go edit details over here also. If you want to edit the role, if you want to edit the function, you can. Avinash, can we edit the maker to checker and checker to maker? Yeah, you can. You get the option. See, I Yeah. created the. So maker to be approver. So in that case, DSC need to be uploaded. Yeah. If it is a maker and you want to make it as an approver, you can do that. But provided you have to give him the function of DSC, you will have to attach the DSC function. Yes. Yeah. That we have. And if at all that user has left or you want to suspend it, there's an option also. You can. Okay, we can suspend the We user. can suspend. You can disable. Disable is a permanent option. You disable it,
that user ID is termed invalid in system. He won't be able to log in. He won't be able to do anything. Okay. So what is difference between suspended and disabled? Means that disable Suspended is for a uh, time being. It's for your time. मतलब आपको inactive. सिंपल हाँ इन थोड़े टाइम के लिए आपको सस्पेंड करके ना बोलते हैं ना 1 महीना हाँ या 2 महीने का हाँ उतने टाइम के लिए so ठीक that is in that Uh, ठीक situation. I Okay. have one more question. अगर हमको new unit approver और maker बनाना होगा तो we have to make all together new ID again. हाँ अगर आपको मतलब अगर आपको existing users नहीं यूज करना है तो आपको मैंने जैसे बताया अभी स्टेप वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा आपको. ओके ओके ठीक है. एंड देन हम लोग पुरानी आईडी को डिसेबल कर सकते हैं जैसे आपने अभी हाँ बताया. if it is not if it's not in use and if that person has left or any various reason you can disable that user ID if you want. Okay. As I said, फंड you के will have लिए to select और that. Just a minute, फंड के ma'am, लिए और please. एफएमई के लिए Just a अलग minute, just a अलग minute. Hello. यूजर. Just a minute, please. Just a minute. So as I said, वो user ID पे select करना है आपको and then नीचे option आएगा आपको status suspend disable का. So you select disabled. That user ID is Okay. permanently disabled in the system. Okay. But again, as I was saying, if you are making a new maker and approver, okay, make Yes. sure you give them the functionalities correct. You assign the functionalities correctly. Okay. 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 At Yeah. one time, how many maker and approver can be there, like the IDs? There is no limit to that. There's no limit. To There's that. no You can limit. find. Yeah. There's no limit. And You one can. more thing related to this only. If we want to change the main admin email ID, can we do that also? Yeah, you can. You can go again to maintain unit user. For the purpose of So- fund and FME, we required different So- approvers Just a and minute, ma'am. Just a minute. Just a minute. Sorry, I'm. So I click on edit and then I get the option to change the admin ID. So this is my Oh. admin ID. You can see. So Yes. once I clicked on edit, I can get to change the mobile number, phone number, email address, everything. But login Okay. detail will remain the same, Okay. no? Thank you. Yeah, that user ID, first name, last name will be the same. Email ID Okay. will change. Okay. 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 Thank you so Okay. much. Yeah. Thank you. Thank you. Ma'am. Yeah. Okay. Most welcome. Ma'am, sorry. Can you say you were saying something? sir, for the fund and FME, we need the different approver and maker. If you have Abhishek here, if you have received different LOAs, yes. If same LOA, it's up to you. Both activities Okay. are under same LOA or different LOA. It will be different LOA, sir. हाँ तो वो different ही हो जाएगा. Okay. 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 So now I'll just take the questions at the end of the session. Again, I'm saying, please. Okay. On the left hand side, as I just showed you the user management part. One of the important is entity details. Sumit Kumarji, I'll take your question at the end of the session. We'll answer each and every question at the end, please. Yeah. So units who register in SEZ Online, you can see each and every details in entity details. Okay. Your DC, your ICZ, your sector, your GST and IC, IFSC, everything. Your major industry, minor industry, your LUT details, your SEZ address, and your main company registered address. Everything is here. So if at all there is any issue and you want to write to ICZ info, your entity ID, and we ask you for your entity ID, it is here. Please make sure to mention this entity ID. And if there is a request involved, also mention the request ID. Okay. So it'll be easier for us to navigate you through your issues. Another, if user ID, if a particular maker and approver has been locked out in the system, the admin has a function reset password. You can just type in the user ID. Wait a minute. I'll just show one. You can just type in this user. And you can reset. You can enter the password over here.
this password that you enter is a temporary password for that user to log in. Okay. And then he can, after he uses this temporary password, he get an option to make a new password. So that's not a problem. Users can reset. You can use this option for unlocking user IDs or even resetting the password. If at all admin ID has been locked out, and you can again go to forget password and unlock your or reset the password for. You can reset the password for the admin ID also. Okay. Acha, you might be wondering, as I said in the training session, why there is if the admin ID is not processing document or any transaction, then why there is a function of inbox. So in between, as I said, if you miss out in a particular, if a maker has a function and an approver does not have a function to process that document, okay, the request will not go to the approver inbox. It will go directly to the admin inbox. In that situation, if in such scenarios, what you can do is you can then give that approver ID the function and reallocate that request to that. Through this feature, you can reallocate that request to that approver ID again, or reassign basically from admin ID. You can reassign that feature request to that user. Okay, so this is the admin layout. I'll move on to the maker ID and I'll show applications like your DCP intimation form, or let's say detail procurement, soft text. So again, on the left hand, please observe on the screen, as you can see on the left hand side, the functions that you are given at the time of creating. At the time of creating this user, you are giving them functions to process all the transactions. So you will see that the maker has all the functions. You can see each and every module there. Your data service procurement font of data procurement is available here. Okay. And the applications which I was talking about, like if you want to intimate your DCP, you can. So under applications, so in this screen right now, what I'm showing you, just make a note of it. I'll be showing you DCP intimation application if you are having a DRBCP activity or broadbanding. You can file through this screen. Select form type admin. Then you'll see further drop down option available application, that is if you want to have a DRBCP, you get an option. You can select this application. Sorry. Intimation of a DCP, your date of commencement of production. Select it. So here you can see the basic details are there. At the time of registration, the details that got captured is the same auto-populated. You can capture the date when you commence your first production. And once you mention the details and submit it, we'll go to the approver ID and then approver will authenticate with the DSC. I'll go to the DC office. So once the DC office approves this DCP intimation, the three legs which I told you, the DC initiator, verifier, and authorizer. Okay, once the DC authorizer approves this intimation form, your DCP will be updated, plus your LO will be automatically updated for 5 years. Automatically, system will take it for 5 years, your LUT also. Okay. I'm not going through the complete workflow. I'm just showing you how the UI looks. One thing, LOA will be extended for 5 years only when we have commenced the business, right? Yeah, right. So once this form is approved by the DC office, it will automatically be
updated for Okay. 5 years. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Yes. So if you've already initiated, make sure it is approved. Okay. For IFSC unit, the request ID for export is relaxed. For non-IFSC, you have to mention the Huh. soft or export shipping bill details in the DCP. Okay. And then there are other So applications. one So more they are thing, once But the LOA this is will be about to expire, hello, hello, once ma'am. LOA is about to expire, hi, once the LOA is about to expire, how do we apply for renewal? Yeah. So in the maker ID, you can see LOA extension and LOA renewal. So LOA, you will have to go for LOA renewal. So can you move the screen to left? Because the whole screen is not visible. I guess, ma'am, you'll have to zoom out. I guess. Yes, ma'am. Can you see the screen, ma'am? दिख रहा है स्क्रीन तो दिख रहा है मैम ने शायद से जूम इन करके रखा है सो मैम कैन यू जस्ट जूम लिटिल बिट आउट ऑफ दैट स्क्रीन से or maybe there is a scrolling option. Check out for a scroll. Yes, sir. Yes. Now. Sir, how can we check our existing, the LUT which was approved? Because what we are doing is So what So happens now if can you you show me? Will you just a minute, renew? ma'am, so your LUT details are available here. You can see this. All your existing LUT details will be available in entity details screen. we just wanted the whoever were the approvers in that, the previous which was approved. So you get a request ID. You select the request ID. Okay. No, in And fact, then it you go was to when अभी just 4 सॉरी फॉर years back. इंटरप्टिंग आई थिंक ये इज द न्यू गाय हु हैज जॉइंड उससे पहले जो बंदा ने Okay. कर दिया वो कैसे पता चला कि उसके पहले जो बंदा था उसने किया कि नहीं किया किया कि नहीं किया मतलब एलईडी ऑलरेडी एक्सपायर्ड है ये सिचुएशन में कि हो Already करके expired. हुआ है? Already expired. तो अगर आप एलयूटी पे सिलेक्ट करते हो इफ यू आर गोइंग टू अपडेट एलयूटी एंड अगर आपको सिस्टम वैलिडेट करता है कि एलयूटी इज ऑलरेडी इनिशिएटेड ठीक है Yeah. तो सिस्टम इज ऑलरेडी तो देयर इज अ एलयूटी रिक्वेस्ट व्हिच इज इन प्रोसेस आपको Yeah, तभी शायद से दिखाई नहीं तो यू कैन राइट इट टू SEZ info to identify such request okay Okay. so that and we will let you know कि ये रिक्वेस्ट इन प्रोसेस है आपको रिक्वेस्ट आईडी के साथ भी दे देंगे आपको ठीक है Yeah, because हमने ये किया था तो but it was we got a deficiency saying that the approvers which was there in that approved LUT are not matching with this current one, So No issue, sir. What you can do is after the session, write an email to SEZ info. Okay. okay, okay, I'll share you the contact details and everything, and we will tell you which status your request is stuck in and what is the next step that you require to do and with whom it is with this request is in whose inbox. We'll let you know. Okay. thank you. Yeah. Okay. So just a minute. Just some water. हाँ. This entity detail function is there available with each and every user. Okay. So ऐसा नहीं कि आपको एडमिन आईडी में लॉगिन करके चेक करना होगा मेकर आईडी में लॉगिन करके चेक करना है हर एक रोल के पास ये लिंक है सर्च है रिपोर्ट्स है और इनबॉक्स ये these are the basic functions which is there in each and every user hierarchy. Okay. Now to one of the user who was asking a question, LOA renewal. If your LOA is expired and you want to renew it for the next 5 year, you will have to file LOA renewal. LOA, not LOA extension, LOA renewal. You will have to fill up the
form and submit it to the DC office and get it approved. Sorry. एलओए रिन्यूअल हाँ 2 महीना पहले करना है. हाँ, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, there is a nine system keeps sending you reminders, alerts through emails, and a pop-up will also display on your home screen continuously that your LO is about to expire and अभिषेक जी ईमेल्स जो जाता है ना वो उनके जो मेन पर्सन जो इनिशियल में आता है उनके पास जाता है. यूजर चेंजेस तो यूजर जो यूज करता है उसको पास ईमेल नहीं जाता है. तो एट द एंड ऑफ द सेशन हाउ टू अपडेट द ईमेल एड्रेस वो भी दिखा दीजिएगा फ्री फ्रॉम. वो मैंने दिखाया ना, वो मैंने इन दी एडमिन आईडी आई जस्ट शोड ना, आई जस्ट शोड कि वो यूजर मैनेजमेंट में जाके यूजर आईडी का एडिट करके कैसे वो ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं. सो आई शोड प्रोफाइल वाला जो दिखाया आगे. आपने. हाँ, तो इधर भी जाके मैं आपको बता सकता हूँ. सो यू कैन एनी मेकर कैन यूजर रोल कैन लॉग इन, गो टू एडिट प्रोफाइल ऑल्सो. अरे सॉरी एडिट प्रोफाइल. Okay. So once you click on edit, you get to change the user role also. So there is an option at the admin end. From admin ID also you can change the email address, or from that user ID also. Sir, can you mute? Hello. Hello. या कर रहा हूँ. ठीक है कर. आई थॉट दैट आपके उधर से नहीं कर रहा हूँ. जेबी बोड़ा का उन्होंने आपका नंबर दिया था तो उधर Okay. ही So you can from admin ID also you can edit that particular user's email address, or from that user ID itself also from you can go to edit profile and edit the email address. In both ways you can do that. I'll move on to DTA procurement. It's a simple form. आप जो procure करते हो goods domestic market से, ये फॉर्म भरना पड़ता है. आई गेस ये एक मिनट, जस्ट अ मिनट, सॉरी, ये यूनिट का रजिस्ट्रेशन, जस्ट अ मिनट. DTA procurement. So general details में unit details रहेंगे. Your unit details, your unit name, GST and IIC. Your unit address is here. Okay. Supplier का GST आपको यहाँ पे कैप्चर करना है. ठीक है. जिसका GST है वो ऑटोमेटिकली यहाँ डिटेल्स यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा. जस्ट अ मिनट. I'll just go with email ID. It's a validation. Just a minute. Anil, Malik, GST and then GST and just to test, I'm just taking a GST of a particular unit. So if it's a manufacturing export, you can just select the type of DT unit it is. It is a non-mandatory. Just there is an option there. If it is supply under bond cum LUT, you make sure the option is there. If it's under supply under IGC, you can select that option also. Okay. So you mentioned
सर आप म्यूट करो प्लीज। थैंक यू। एलयूटी नंबर, आप अगर बॉन्ड का एलयूटी में हो रहा है तो आपको एलयूटी नंबर और एलयूटी की डेट यहाँ पे कैप्चर करना है। सर कैन यू राइट, मैं देता हूँ, हेलो, आप लिख दो ना सर। इट इज AD हाँ 240 AD 240 240 2240 235470 235470 3578 D for Delhi। 70। हाँ ओके, यस। हाँ एलयूटी डेट क्या है? एलयूटी डेट है 29 फरवरी 2024। ओके, and save the details. हाँ So, as I save the details, हाँ you can इनवॉइस see a नंबर डालो। unique. एक मिनट सर, एक मिनट। एक यूनिट, एक unique request ID generate हुआ है. So there's a unique. So whenever there is an issue with this particular request ID, please keep this request. Note this request with you. Whenever you're filing any request or particular transaction, this request IDs are very helpful. So note this down somewhere or maintain a record of it. Okay. Now going to the next tab, invoice details. Add invoice number. RA19 हाँ RA बिल नंबर 9 RA हाँ बिल नंबर 9 नंबर लिख दो चलेगा। वैल्यू मैं डमी ले रहा हूँ। हाँ ठीक है। Let's say 29 you फेब procured. Just चलेगा example. चलेगा। हाँ ठीक है। It's a sale. So let's say it is a sale that has happened. Currency INR. Save. So we have created a invoice detail over here. Next is वो invoice में item क्या थे, तो item के details आपको यहाँ पे capture करना है। हाँ दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। Yeah. Can you tell me, Prakash? मेरे पास सर्विस इनवॉइस, एक मिनट, गुड्स का, जस्ट गिव मी 1 मिनट। डिटेल प्रोक्योरमेंट के बाद ये फाइलिंग के बाद मैं SCRF मॉड्यूल बताऊंगा आपको एंड और DSPF मॉड्यूल बताऊंगा। यस मैम। जो ये इनवॉइस नंबर है, ये कैसे, मतलब हाउ वी विल गेट दिस? ये प्रोक्योरमेंट आपका, आप जिससे इनवॉइस लेते हो, मतलब हाँ, तो वही इनवॉइस तो नंबर आपको यहाँ पे कैप्चर करना है। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, राइट? मतलब ऐसे कुछ भी डेटा, कैसे हो मतलब सकता है ऑल, मैम, मतलब वो राइट? आप जहाँ से प्रोक्योर कर रहे हो उधर से तो इनवॉइस रहेगा ना, तो वही इनवॉइस आपको कैप्चर करना है आपको यहाँ पे। ओके ओके, एंड देन हमें इनवॉइस अपलोड भी करना पड़ेगा? हाँ, तो यहाँ पे नीचे एक I'll show you that option will come. I'll show you. ओके अभी तो आप कुछ भी डाल दो क्योंकि एट प्रेजेंटली सर्विस का ही इनवॉइस है। ओके डीडी ओके, प्रोक्योरमेंट तो नो हम लोग इश्यूज। सेम डे फाइल कर देते हैं, वी डोंट। हाँ, मैं इस सैंपल के लिए हाँ कुछ भी डाल देता हूँ। Let's say laptop. I'm just giving it a sample. You brought in 10 quantities. The price of 10,000. Sorry, one quantity. Box. उसका measurement क्या है? Box है, carton है. So these are the specifications, unit of measurement that you'll have to give. So if it's a box, you'll have to give it box. IGST अगर नोटिफिकेशन है आपके पास तो you can capture that details. So जितने भी CTHs रहते हैं, okay,
each and every master is updated in the system. So ऐसा हमने miss out नहीं करते because since it is a says online also caters manufacturing units and other IT servicing units. So it is a very need for us to update CTH's custom notifications time to time basis. Okay. So just a minute. 8471 ले लो लैपटॉप का. वही Person computer. Select. सर यहाँ पे ये HSN कोड मेंशन करना है, करेक्ट? Correct. CTH HSN code same. It's one of the same. ओके ओके. CTH HSN code is one of the same thing. You have to just capture that. Select, and automatically this CTH which I selected is there. Okay. Close. If you have any IGST notification which you want to capture, all the notification, trade notification which is available is there in SEZ online system also. But अभी जितने भी users है, they don't know the GST regulation notification. I'm just showing if at all in future they come to know there's this notification section, you can just select the notification and the serial number. There's an option here. नहीं, but it will be on zero rated supply, right? Yeah, zero rated supply. You have to select the zero rated supply वहाँ पे last में. वापस click करो. हाँ, IGST पे वो- हाँ. सर्च पे डालो, सर्च पे. अब इधर अच्छा इधर बोल रहा हूँ. हाँ वहाँ पे क्लिक करो, नीचे जाओ, जीरो रेटेड एकदम लास्ट में. हाँ जीरो रेटेड सप्लाई सिलेक्ट करो, जीरो पे सिलेक्ट करो. हाँ सेव. ठीक. दिस इज व्हाट वी डू. Select. So as you can see, the duty rate applicable is zero updated, and you can just save the data. Taxable value content. So now we updated the invoice and we updated the item that was coming in that invoice sheet. Now one of the users said upload documents. So here is a feature where you can refer which type of document that you are adding. You can select that. You can just give a reference number and click here for upload. I would add one thing. If the unit is uploading invoice after the material is has been taken inside, then inward stamp copy invoice is requested to be uploaded. Custom का इंडोज का स्टैम्प होना चाहिए. Okay. अच्छा. Okay. Sir, is there any option for bulk upload? So you can upload in this link. You can upload a zip file also. मतलब, if you have a PDFs and Excels, you can zip it and you can upload it together. So the data would be different for each of the invoice. So how do you capture all the data together in case of multiple upload? My voice is cracking. Can you? Hello. For multiple invoices, there will be different data, right? So if you're uploading multiple invoices, how would you capture all these together? Because you showed an option, but One vendor details can be added at a time, not more than that. Correct, Ronak sir? You can add. See, there is one invoice you can add if it's the same seller, if it's the same person. Okay. There's the same person, then we can upload. And bulk. then you can add another invoice. You can capture that details here, and you can go to the item detail and you can add that detail.
but it has to be only Right. one. कहाँ से जिधर से So प्रोक्योर this करते हैं is वो एक ही बंदा है. applicable only for capital goods? हाँ, this is only DTA procurement is only for goods that you're procuring from the domestic market. Duty free goods mainly, Right, but or it could be Yeah. the goods goods of on which you will any be kind. taking the refund. नहीं, For the example, if goods. you're setting up a new office, so Yeah, any kind of for that only we'll be filing this document. right, so Okay. So is So there I any think the form related to service upload, software subscription if we have taken? I'm coming to that. I'm coming. After this data procurement, I'll be coming to data service procurement, and then I'll be going to SCR. Okay, and then I'll take you a little bit over to APR and then NPR. Okay. Yeah. So to summarize, the last tab is add document. So you can mention the document that you're adding, invoice details, and you can upload. You can upload a PDF. You can upload an Excel. You can upload a zip file. You can, if there are multiple PDFs and you at a time you can upload only one. So make sure that 10, if that 10 PDFs, you zip it and you can upload it. Max size is 10 MB. Okay. Maximum size is 10 MB for an upload. Okay, so I'll go to the, so once this document, once you've completed each and every tab, you've completed each and every validation, you have to go to submit. And as I showed you in the PPT, how the form looked is the same exact. Here are your basic details. Here is your invoice detail and your item details as well. And then this is just an IGST part. What is if there is an IGST availed details populated. So you confirm this document and it goes and the maker submits it and it goes to the unit approver. Then unit approver just verifies the details and then submits it with authenticating with the DSC to the DC office or to the custom office. Now I'll go to the next module as the DTA service procurement form. So many would be looking forward for this form since they procure services. So you can in service procurement form, it is not restricted to one particular domestic service. You can capture multiple services that from multiple domestic that you have taken. Okay. Here you have a macro. I hope everyone is able to see the screen. This is a macro item details upload. This you can download it from. Please look here on the bottom right. System settings, usage managers, and file format. You can click on this link. System will directly take you to the download section. Go to manual and file format. Scroll till below till you see DTA service procurement form. You will get this macro. DSPF item detail upload template, which I just downloaded, which is there in my folder already. This same macro, you will get it from this link version. Okay. Uh, Open this. प्रकाश जी आपके पास कोई सर्विस आपके पास है ना कोई डोमेस्टिक सर्विस फॉर्म वो हाँ दे है दो ना, एक मिनट। So invoice number is 90. 90 invoice date. Users make sure that you follow MMDDYY.
Okay, so many a times you have 27 got December cases. 24. 27 27 December 20. December 24. Okay. Credit note, debit note also can be uploaded. Yeah, Yeah? yeah, yeah. Yes, yes. 27 December, no? Yeah. Okay. Make sure it is in MMDD format, DD because many times what happens, we got cases where user आपके पास अलग से एक्सेल शीट होगा और वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं डेट फॉर्मेट, तो इससे क्या होता है ना कि ये मैक्रो में वो डेट फॉर्मेट कैप्चर हो जाता है, एंड when you upload that DSPF into SCV online system, it gives you a validation कि invoice date is not captured correctly और वैसा validation आ जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि कॉपी पेस्ट के कारण की वजह से आपका डेट फॉर्मेट चेंज हो जाता है, तो मेक श्योर इट इज, आप जब भी आपका ये एक्सेल शीट मैक्रो भर जाता है, आपने ये डेट फॉर्मेट करेक्ट डाला है कि नहीं, एक बार वो चेक कर लीजिए। प्रकाशी वाली कुछ भी ले वैल्यू 868940। 866940। हाँ चलेगा, ले लो कोई। ऐसे 995463 995463 63। तो यहाँ पे सारा SAC कोड अवेलेबल है 995463। So, as you can see, automatically the SAC which have taken, उसका service description automatically populate करेगा। Supplier name, I'll just take it as DT. Pranam HVAC Pranam HVAC Engineering Private Limited. Okay. Let's say गुजरात से डालते हैं। अहमदाबाद गुजरात। हाँ, ये जो जहाँ पे स्टार मार्क है those are important fields. So if you एड्रेस लाइन 2 नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ऐसा भी काम नहीं। अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा गुजरात। गुजरात ठीक है, पिन कोड क्या है? इट इज 380015। 380015। पिन पैन नंबर बता सकते हैं या GSTN बता सकते हैं? GSTN is 24AA HCP 24 AAHCP HCB TP for parrot हाँ HCP 2093 C1 T1 C for cat C1 okay C1 Z P Okay. P for parrot। ठीक है, वो डीटे यूनिट का, डीटे सप्लायर का आप उसका ईमेल एड्रेस कैप्चर कर सकते हो। सो प्लीज कैप्चर again capture accurate email address over here. Reason why, because once you submit this DSPF to the customs office and they approve this document, okay, तो जिन लोगों ने अपने सर्विस प्रोक्योरमेंट किया और आपने उनका ईमेल एड्रेस डाला है ना, सिस्टम ऑटोमेटिकली एक अप्रूव्ड कॉपी, कस्टम का अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट उनके मेल आईडी पे भेज देता है। सो मेक श्योर दैट यू कैप्चर करेक्ट ईमेल एड्रेसेस ओवर हियर। सो नाउ इन दिस केस इट इज सप्लाई अंडर बॉन्ड डिटेल्स कैप्चर किए, बॉन्ड का डेट कैप्चर किया हमने, IGST रेट है तो वो डाल सकते हैं, एंड देन just delete this data.
Okay. And click on generate file. Okay, so I've not. If I change the format, the system will validate me. So here I have changed the format. So I'll go back. I'll try to generate the data again, generate the file. Yes, it took. So I can just take your file will be this is a domestic procurement service fund. So the file that you generate will be saved in .tspf extension. Okay. Okay, file generate successfully. Now we can go, if you go back to that folder, you'll see the file that we created right now is there. You go to your login, service procurement form. Let's say you're doing it for the Feb, your reporting month is for February. Just an example. और दिसंबर का है ना तो दिसंबर डाल देते हैं दिसंबर 2024 save. There is no restriction for filing DSPF. आप n number of DSPF भी एक साथ बहुत सारे रिपोर्ट कर सकते हो एक साथ बहुत सारे रिक्वेस्ट भी बना सकते हो. There is no restriction for that. So now you get an option, choose your invoice upload. Sir, is this mandatory to go on monthly basis, or we can plan for weekly and just upload, keep on uploading weekly basis? This has got no restriction or there is no validation to it. आपको जब report करना है मतलब if you have procured it in last week and you want to submit it to the custom today, you can do that. That's no problem. Same for the detail procurement also? Yeah, same for the detail procurement. Okay. The validation, look out for just to give you clarity, look out for validations that come on top in red. Okay. As I said in my during the PPT, that the validation will come. You will have to file SURF before 10th. So that validation will be there in red. Okay. So system will notify you that. So those cases are very important. Okay. Yeah. This can be done anytime, any moment. Thank you very much. Okay. Yeah. So service. Now, just a minute, sir. So just a minute. Yeah. I'll just upload this file and show it to you. So this is the file which we just created. Open. This file is here. Click on upload. Automatically, the detail supply details which you had captured in the macro will be populated here. The values and everything. अभी क्या करना है आपको आपके कोई इनवॉइस रहेगा तो वो इनवॉइस आपको अटैच करना है अपलोड करना है that's it and you have to submit it to the maker approver and approver will authenticate it and submit it to the custom office. Okay, so this is a simple. If at all ये गलत हुआ है तो आप ये डिलीट भी कर सकते हो वापस से दूसरा फाइल भी आप अटैच कर सकते हो अपलोड. यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स ऐड नहीं किए थे तो वो वैलिडेशन थ्रो कर दिए. So look out for such validations. Invoice date again, which should be future date of reporting. Look out for such validations when you upload. Okay. So let's go back. Sorry. The other original upload which we did. Upload and submit. So you can see the form. I guess in the PPT it wasn't that clear. So I'll just maximize it a little bit more for you. बस शायद इतना हो सकता है. So this is how the form looks. Your general details, your invoice details are captured. Invoice and item details. So यहाँ पे सीधा सिर्फ एक डिटेल सप्लायर का है. अगर आपके पास मल्टीपल डिटेल सप्लायर है तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आएगी. ठीक है, so don't worry. So each and every details will come in serial number order.
and then you just click on confirm, and it'll go to the approver ID. Request. See, this is again a unique request ID. So note these request IDs in such cases. So can we put the invoices related to SCZ services also in this? So that was my question as well. SEZ to SEZ services, where do we need to put that? Suppose नहीं आपने नहीं SEZ ऑनलाइन this का is सर्विसेज लिया domestic है से तो हाँ अभिषेक जी आपको इनवॉइस देंगे, वो भी अपलोड करना है। जो भी एग्जाम्पशन है आपने जब आईजीएसटी एग्जाम्पशन है वो अपलोड करना है। नहीं, अभिषेक I जी am आपके asking. इनवॉइसेस नहीं मिल रहे हमको। नहीं, वो ऑटो जनरेटेड जो हाँ ईमेल कैप्चर्ड है ना उस पे जाता है, वो दूसरे कोई चेक कर रहा है तो नहीं मिलेगा। जिसमें एप्लीकेशन में जो ईमेल आईडी है ना उसी पे जाता होगा, ऑटोमेटिक जाता है। ऑटोमेटिकली नहीं हम लोग जो नहीं है यूनिट तो अप्रूवल मेल भेज दो, सब ओके मिल जाएगा। बट दूसरा कोई someone else is checking for the No, sir, I am asking about services procured from another SEZ unit. so you can go to zone to zone में से आप वो कर सकते हैं। नहीं, विद इन एसईजेड में इंट्रा आएगा, जोन अदर एसईजेड होगा तो जोन टू जोन आएगा। हाँ अदर एसईजेड यूनिट से आप नहीं, जोन टू जोन फाइल बना नहीं, DSPF is only meant for services procured from DTA, and Yeah. service export reporting form is only when services are provided to foreign clients. Otherwise मॉड्यूल नहीं है कुछ इंटर SEZ या इंट्रा SEZ। पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में होना चाहिए फॉर इंट्रा में। नहीं, बट सर्विसेज का एक्चुअली मॉड्यूल नहीं है। अच्छा हाँ सर्विसेज का लाइन ऊपर भी नहीं सर्विसेज हुआ। है ही नहीं ऑप्शन सर। नहीं सर, अच्छा हाँ सर्विसेज का है और यूनिट और फाइलिंग ऑल्सो आपके उसमें मॉड्यूल है। आप इंट्रा पे क्लिक करो, आ रहा है। सर प्लीज इंट्रा दिखाएंगे एसईजेड मुझे पे क्लिक करो, हाँ सर्विसेज का इंट्रा आ रहा है। SEZ। हाँ हाँ तो इंट्रा एसईजेड बेसिकली विद इन द सेम जोन में अगर आपका कोई यूनिट है तो आप यू कैन आप यहाँ पे बोल रहे हो ना। हाँ 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 सर यहाँ पे लेकिन सर्विस ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग और वो सब है, और अदर्स में अगर जाओगे तो इनवॉइस के डिटेल्स मेंशन करने के कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, वो सेव करने के बाद आएगा इनवॉइस करने के। एसईजेड यूनिट ओके तो यहाँ पे अगर जो वो यूनिट के सारे एसईजेड यहाँ पे दिख रहे हैं। दिस इज अ डिफरेंट यूनिट सो सेल आएगा। आईटी तो यहाँ सर्विस ले लो, हाँ सर्विस ले लो। सर्विस ले लो। ओके हाँ, so after saving you will get the invoice. let's say your value is 1 lakh, your USD या INR आप दोनों दे सकते हैं, ठीक है। Let's see. Can you just repeat this process? So if so we went to intra SEZ and Okay. intra SEZ transfer. What is this? Please This note module that is this intra SEZ module is only meant for goods. It is not for services. Okay. अरे अभिषेक जी, द कस्टम्स ऑफिसर सेइंग दैट वो फाइल करना है, तो देयर इज नो क्लैरिटी अभी। आप नहीं, बोल रहे बट हो नहीं मॉड्यूल करना इसका है ही नहीं ना, है ही नहीं। आप HSN कोड कैसे सर्विसेज का है ही नहीं प्रोविजन, गुड के लिए नहीं, बनाया हुआ है। HSN कोड कहाँ नहीं आ रहा है? क्योंकि दे शोड मी दैट यूनिट हैज फाइल्ड एंड बेस्ड ऑन कैसे फाइल दैट किया है फाइलिंग देखना पड़ेगा। इनकॉर्प ने फाइल किया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। हाँ जी, भेजो किसने कैसे किया है। Kashyap, in case of import, we only file the bill of entry. उसका भी invoices कहीं हमें upload करना पड़ता है अलग से क्या? मैम क्या पूछा आपने? Sir, in case of import, if we are buying something from out of India. मैम वो आइसगेट पे शिफ्ट हो गया है, इसीधर ऑनलाइन पे नहीं है। यू हैव टू रजिस्टर आइसगेट। उधर ही करना है, फिर यहाँ पे कोई इनवॉइस नहीं अपलोड करना है, ये मैं पूछ रही हूँ। नहीं यहाँ पे
इंपोर्ट के लिए नहीं आएगा, इंपोर्ट एंड डीटीए Okay. वो आपका आइस गेट में है। ठीक है सर, ठीक है। फॉर गुड्स, हाँ, सर्विस के लिए नहीं है। Yes, yes, yes. I have one more question with respect to DTA goods. So Okay. जैसे कि there is a unit जिसकी ना सारे जो goods and all है वो rent में included होते हैं. It's like if they need any goods तो वो rent मतलब मतलब जहाँ से उन्होंने लीज पे लिया है ना वो ही वो प्रोवाइड कर देते हैं. So वो कैसे कैप्चर करना है? वो आपको कुछ डिटेल्स देते रहेंगे ना. नहीं वो Sir, वो आइस तो एक गेट kind पे of फाइल services हो गया वो ना. Services we are taking it. Suppose sub unit has installed AC and AC they are charging only renters, not they have not purchased ICZ unit. So it will be services only, correct? Correct. बट आई थिंक व्हेन गुड्स आर एंटरिंग योर प्रीमिसेस ना वहाँ पे वो ये प्रकाश जी डीटीए प्रोक्योरमेंट आइस गेट पे कर रहे हैं सब यूनिट्स अभी. नहीं वो नहीं अभी लाइव नहीं है, इट इज इन एसईजेड ऑनलाइन ओनली, वो अभी इंट्रा नहीं एसिडेंट लाइव. में ऑप्शन है ना नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हायर रेंट वो सब ऑप्शन है तो गुड्स आर कमिंग तो ये डॉक फाइल तो करना ही पड़ेगा. So डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा क्या? उसकी हाँ रिपोर्टिंग कर करनी दो. पड़ेगी? हाँ इनवर्ड आ Yes, रहा है yes. तो ऑप्शन है ड्रॉप डाउन दिखाओ ना अमीना इनवॉइस में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको डालना पड़ेगा सिलेक्ट करना पड़ेगा. ये बट DSPF अगर में बता इवन रहा दो वो रेंट में इंक्लूडेड है तब भी? हाँ बट आप कस्टम से चेक करो इफ दे आर अलाउइंग विदाउट इट देन बट आई थिंक व्हेनेवर गुड्स आर कमिंग यू विल हैव टू फाइल इन माय अंडरस्टैंडिंग. बट दैट गुड्स विल बी कमिंग फ्रॉम दी मतलब वो यूनिट के नाम पे नहीं आएगा ना, वो तो वो जिनसे हमने लीज पे लिया है वो प्रोक्योर कर रहे हैं. हाँ बट आप एक बार पूछ लो कस्टम से कि दे आर अलाउइंग जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम सर्विस इनवॉइस अदरवाइज ये डीटीए प्रोक्योरमेंट में ये ऑप्शन अवेलेबल है. ओके. हमें रेंट का भी डालना पड़ेगा क्या? उसका क्लैरिटी कस्टम से लेना है. रेंट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी वो इंडियन रुपीस में है, वो इंट्रा में नहीं जाएगा. एज इट इज अ जीएसटी मतलब डीटीए प्रोक्योरमेंट पर्पस क्या है कि आपको एंडोर्समेंट ऑफ कस्टम्स टू बी गिवन. सो एज पर द सर्कुलर ऑफ जीएसटी आपको एंडोर्समेंट सप्लायर को देना होता है. तो अभी एट प्रेजेंटली डीटीए प्रोक्योरमेंट इज द ओनली ऑप्शन वेयर एंडोर्समेंट ऑफ इनवॉइस इज देयर, राइट अभिषेक जी? एंडोर्समेंट के लिए खाली डीएसपी भी है ना, कस्टम के एंडोर्समेंट फॉर जीएसटी. सर्विसेज के लिए डीएसपीएफ सर्विसेज के लिए है. हाँ. दो वी आर तो सेइंग डीएसपीएफ फाइल करो but rule 89 requires endorsement by SO but we have observed that some officers GST officers are also considering SEZ approved DSPF approved invoices so it is there is some variation in process followed so कभी ऑनलाइन इंटीग्रेशन हो जाएगा विच इज अंडर डेवलपमेंट उसके बाद रूल में चेंज होगा. टिल दैट टाइम इफ जीएसटी ऑफिसर इंसिस्ट फॉर मैनुअल एंडोर्समेंट वो देना पड़ेगा. नहीं हमारे इधर ऑनलाइन ही है. दे से दैट को डेवलपर का आप इंट्रा में फाइल करो फॉर एंडोर्समेंट. इंट्रा सर्विस का लाइव हुआ ही नहीं है एंड उसके अंदर एंडोर्समेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो ओनली ऑप्शन अरे बट अवेलेबल इंट्रा एसईजेड गुड्स के लिए सर्विसेज के लिए बनाया ही नहीं है. राइट, एब्सोल्युटली राइट, यू आर राइट सर. सो द ओनली ऑप्शन इज डीएसपीएफ, एंडोर्समेंट ऑफ इनवॉइस के लिए ओनली ऑप्शन इज डीएसपीएफ. यस दैट टू फ्रॉम डीटीए. को एसईजेड डेवलपर को वो विद इन एसईजेड ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे कस्टम्स वाले. सर वही एसईजेड टू एसईजेड के इनवॉइसेस अभी मेंशन नहीं करना है इंट्रा एसईजेड ट्रांसफर में. नहीं अभी इंट्रा नहीं करना है, जैसे बताया ना सर्विस के लिए. अभी आप डीएसपी में फाइल करके यू कैन गेट द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द कस्टम्स. ओके. So I think I'll go to the next module, SERS, Service Export Reporting Form. Okay, so this service export is available under Unit Approver login. So you can log in with your Unit Approver. On the left hand side, see again if you see the links on the left hand side, you'll get you can distinguish that
सेज ऑनलाइन पेमेंट्स, पेमेंट लिंक, आप जो टॉपअप के लिए पेमेंट करते हो, तो ये यूनिट मेकर के पास नहीं है, एडमिन के पास नहीं, तो ये सब यूनिट अप्रूवर के पास है. You can see these things. If you go to service export reporting form, again there's a macro that is available in our download section. Right above data service procurement form, you can see service export reporting form. Any service that you're exporting, you can. The same module is already downloaded. Macro which is already downloaded is here. Sorry. SERF also has to be submitted after the commencement of business, right? Yeah. And before that, do we have to submit nil? Actually, just I want to clarify. If you are filing your first export invoice, it will be through SERF. If you are non-IT service provider, then you will have to file SERF. System will allow you, and you will have to link that SERF request ID in your DCP intimation request. वो रिलैक्स्ड है. DCP without export invoice भी कर सकते हैं. If it is a IFSC unit for which the export invoice is not applicable, तो वो relaxed है. But if if any unit is providing it to any foreign client and it is available, then you can file SERF form. Okay, yeah, noted. But वो business commencement के बाद ही होगा, right? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं एग्जांपल देता हूँ. बिजनेस कमेंसमेंट का प्रूफ यही है कि आपने फर्स्ट एग्जांपल है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट किया या सर्विस एक्सपोर्ट किया. तो फॉर दैट यू हैव टू फाइल सम डॉक्यूमेंट फॉर विच फॉर सॉफ्ट IT कंपनी इट इज सॉफ्ट टैक्स, फॉर सर्विस कंपनीज इट इज सर्फ, एंड फॉर मर्केंडाइज इट इज शिपिंग बिल. तो आपको पहले वही सिस्टम में फाइल नहीं किया तो एक्सपोर्ट कैसे हो जाएगा? ओके, ठीक है. ओके, ठीक है. थैंक यू. Okay. So continuing with SERF, so this is a module which is item upload first. Just like DSPF, there is this item macro which is there. You have to download it from the downloads. It's available in the download section. Wait. Okay, so this is just a dummy software details which I've entered already in this. As you have done in DSPF, the same details you can, in the same format, you can capture or enter details over here. Your invoice type, which is if it's service software exports on site, off site, royalty from software exports, you can capture. Software exports other than IT and IT enabled services also you can capture over here. These are the three types which you can capture. The name of the client from where to whom we had exported the service, address, country, any agreement with that client details, you can capture the information. This is not mandatory, but you can, if you have, you can capture. Service exports or service code or software type. There is a list available. You can select the code which is appropriate. Capture the invoice number, date, currency, value, and this system will automatically calculate it. Few of the currencies are not updated here. कोई करेंसी यहाँ पे अपडेट नहीं दिखता है सर. जैसे कौन सा करेंसी? हेलो, कौन सा करेंसी सर? एक MGA करके था, MGA का, तो उसका अभी Avinash, go to annexure to check which currency. Right sir. मैडागास्कर का है शायद से. आई थिंक आपने पहले भी ये हाईलाइट किया था क्या?
राइट राइट वो मलागासी फ्रैंक है वो सर, मलागासी। अभी उसका वो चेंज होके कुछ आया था सर। नहीं सर, वो मडागास्कर MG रहे MGA और MG रहे। ये देखो सर, मलागासी फ्रैंक है। यू आप MGA नहीं है, इट्स मलागासी फ्रैंक। ओके मलागासी फ्रैंक अवेलेबल है, सो यू विल हैव टू सी जो आपको करेंसी दिया, आपको मलागासी फ्रैंक में कन्वर्ट करके उसको करना। आई गेस आपने मेल डाला था इसके रिगार्डिंग, मलागासी आरिया करके आपके पास था एंड राइट करेक्ट। So it is there in Malagasy francs. You can select that. ओके MGF. ठीक है. So annexures में you can get the country code which is there. Country code आपको अगर पता नहीं रहेगा तो annexures में हमने सारी details बना के दी. Country code, currency, directory, service code की directory भी available है यहाँ पे. So you can select the services and then the code. If you know the service but you do not know the code, then you can go refer through the annexure. And this is the invoice upload. So यहाँ पे आप डिटेल्स डाल सकते हो, कैप्चर करते हो इनवॉइस का, आपका सर्विस एक्सपोर्ट्स का. एंड जैसे प्रोसेस था DSPF में हम लोगों ने फाइल जैसे जनरेट किया था, सेम फाइल आपको जनरेट करना है, उसको नाम देना, आप नाम दे सकते हो, और उसका जो फाइल एक्सटेंशन रहेगा वो SCRF करके रहेगा. सो देयर इज अ फाइल ऑलरेडी सेव्ड. I'll just show you the upload section. कितने महीने पीछे तक हम लोग फाइल कर सकते हैं सर? सर्फ का आई थिंक आप लास्ट 6 months तक आप कर सकते नहीं नहीं हाँ, एक बार ये चेक कर दो, बट नहीं, यू कैन फॉर अलाउ. प्रीवियस फिनेंशियल ईयर जून तक अलाउ होता है. Means for 24-25 it will be open till 30th June 20. ओके I have one question. एक और है वो सो जो एंसिली सर्विस यूनिट है उनका प्रिंसिपल अप्रूवल आ चुका है, तो उनके क्रेडेंशियल्स कैसे बनाने पड़ेंगे? प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब आपका LOA अप्रूव हो चुका, आपको LOA मिल चुके, प्रिंसिपल हाँ, LOA मतलब मिल इन चुके. प्रिंसिपल अप्रूवल आ चुका है हम लोग का, तो उसका प्रोसेस क्या होगा टू ऑब्टेन द लॉगिन क्रेडेंशियल्स? हाँ तो मैम आपको LOA अप्रूव हो जाने के बाद आपको हमें रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना पड़ेगा. एंड रजिस्ट्रेशन फी आप जैसे पेमेंट कर दोगे, हम इस यहाँ से ऑथराइज कर देंगे. ठीक है, आपको फिर वो यूजर, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि आपको यूनिट एडमिन क्रिएट करने को मिलेगा, फिर यूनिट एडमिन से आपको यूनिट मेकर और अप्रूवर क्रिएट करने को मिलेगा. अप्रूवल ओके. So right now you have to make the registration fee payment and then you will be able, once it is authorized from our end, then you'll be able to make user ID, you'll be able to create more user. ठीक है, credentials. Hi Avinash, there's an issue with capturing of the GST at the time of registration fee payment. So what issue are you getting, sir? It says GST not captured even though we are saying yes on the radio button and inserting the GST number there. Still a red error message comes saying the GST number has not been captured. Okay. Can you do I've one sent an thing? email regarding this as well. You've sent it to whom? This was marked to the NSDL SEZ info SEZ, yeah. So yeah, I'll share you my email ID. Just loop me into that email. I'll check. I'll get it verified. Sure. Yeah, at the end of the session, I'll be sharing the contact details, contact person. In that, my colleague Yadnesh, Harshal,
their emails would be there, their mobile number, and my email address, my mobile number, Abhishek sir's mobile number would be there. So you can reach out to us. You can, if there's any Sure. problem. Okay, if it's not addressed, we will look into that. हेलो विनाश जी। यस सर। आप भूपेश बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ बोलिए ना। सर तो एक मेरे क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ द डीटीए सर्विस डॉक्यूमेंट जो फॉर्म होते हैं उसमें जो सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है 4 डिजिट में यूज करना है कि 6 डिजिट में? सर मैंने चैट में दिया है कि वो मास्टर भी है वो मैक्रो में। एक बार अविनाश शो द मैक्रो। मैंने मैक्रो एक मिनट दिखा, वापस से दिखाता हूँ। सर प्रॉब्लम कैसा आता है कि 9954 के आगे कोई डिजिट लेते हैं तो जो इनवाइस रहता है उसके हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाता है सर्विस का। हाँ तो आपको ये 6 डिजिट का है ना सर, 6 डिजिट का ही डालो सर। 6 डिजिट करते ना तो सर वो उसका सर्विस मैच नहीं करता कितनी बार। आप जैसे आपका 9977 आपका लीजिंग रेंट वाली है सर्विस। नहीं अभी हमारा ना एक्चुअली वो इंटीग्रेट हो रहा है ना, तो आई थिंक वहाँ पे भी 6 डिजिट ही बोला है उसने को। 6 डिजिट ही ना आता है ना, 4 डिजिट क्योंकि वो ग्रुप हो जाता है ना। ओके। और सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो आपका इसमें एक पॉपअप आता है बॉन्ड का, अभी प्रोविजन में तो बोला है कि नो डिविडेंड नो क्रेडिट रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्ड, लेकिन आपके इसमें हमेशा मैसेज आते रहता है कि बॉन्ड अपडेट करना है आपका इसके अंदर लेजर में। वो रिवीजन ऑफ ये लेजर बोल रहा है। ये सर रीजन ऑफ बॉन्ड का आता है ना, मैसेज कंटिन्यू आ रहा है सर। हाँ आप इसका जो ईमेल आईडी दिया है ना उस पे एक मेल कर दो विद स्क्रीनशॉट, वी विल लुक इनटू इट। ठीक ओके सर। सर एक क्वेरी थी रिगार्डिंग दिस एससीआरएफ मैम मैं जस्ट ये मॉड्यूल कंप्लीट करके फिर आप वी कैन जस्ट टेक क्वेश्चन एंड आंसर्स लाइक दिस। ओके सर। Yeah, I'll just show this upload and then we can go ahead with the question and answer. I guess almost I've covered almost each and every module which is important. I'll just go through the monthly performance report and APR. So ये दो module हो जाने के बाद question and answers का session रखते हैं, please. Okay? Yeah. So just like DSPF जहाँ पे आपको यहाँ पे जनरल डिटेल्स दिख रहा था, मंथ ऑफ रिपोर्टिंग दिख रहा था, सेम वे SCRF में भी वही डिटेल्स है। रिपोर्टिंग मंथ आपको जो रिपोर्ट एससीआर कौन से पिछले मंथ का कर रहे हो तो यू कैन सिलेक्ट इट फरवरी योर ईयर एंड दीस आर ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो एंड इफ एट ऑल आपका वो मंथ में कुछ सर्विस एक्सपोर्ट्स नहीं हुआ तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट दिस डिक्लेरेशन, सेव इट। तो वंस यू सेव इट एंड यू सबमिट दिस फॉर्म तो it'll go as कि आपका वो मंथ में कोई सर्विस एक्सपोर्ट नहीं था। This declaration you can select. Choose a file. So I had already saved a service export. So as you can see, it has summarized, it has displayed the information in a summarized format कि वो कौन से टाइप के सर्विस एक्सपोर्ट्स हुए थे। तो एक ऑन साइट था, एक ऑफ साइट था, उसके सर्विस अकॉर्डिंग कोड कैप्चर किए और कितने इनवॉइसेस है वो कोड के हिसाब से, वो सर्विस कोड के हिसाब से। तो देयर इज ओनली वन इनवॉइस इन दैट, देन it will show. If there are two invoices, then under this service according code, it will summarize and add the value together into this. And then you can go and submit. यहाँ पे भी आपको समराइज फॉर्मेट में ही इंफॉर्मेशन दिखाई देंगे। कंफर्म करने के बाद ये आपका सबमिट हो जाता फॉर्म। Can we get any report stating how many invoices we have uploaded in this or accept this summary? If you, there is no report. What you can do is you can, in such case, if you want any information about it, you can ask us, you can mail us, and we'll check and give it to you. Okay. Yeah. Thank you.
So there are report functions also. You can glance through this area. But if at all, if you want any specific, you can write it to us and we'll check and get back. Now, my part was coming towards monthly reports, which you have to submit it before before 4th of every month. So as I was saying, system will populate. This is just for investment and employment details. This monthly performance report is just for investment and employment details. सिस्टम आपको प्रीवियस 3 मंथ्स का डेटा दिखाएगा. अगर आपने किसी मंथ में अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आपको वापस से उसको प्रिपेयर करने का ऑप्शन भी दिया रहेगा. से फॉर एग्जांपल अगर आपने जैन मंथ का मिस आउट किया है, जैन मंथ में चेंजेस थे, मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा, तो यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है. I'll show it in a different user. Just a minute. So, prepare monthly report. So you can see the previous data is not there. You can just go. अगर आपको जैन मंथ का इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको डालना है, तो आप प्रिपेयर पे क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन एडिट योर डिटेल्स. सो एज आई क्लिक्ड इट, तो वो वहाँ पे वो डिटेल्स अवेलेबल हो जाते हैं. एंड देन आई कैन जस्ट गो अहेड एंड एडिट. सो लेट्स से 2 more people added. There were 50, like that. And automatically. तो इसमें ये जो ट्रेनिंग डेटा ऑफ एसीज एंड ऑनलाइन पोर्टल पॉपुलेट, सो इनपुट से भी 0 हुआ ना. हाँ, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ वो महीने के लिए है तो आएगा, वो नहीं है तो नहीं आएगा. हाँ नहीं सर, ये मतलब कहाँ, ये कौन से फॉर्म से पॉपुलेट हुआ है? इंपोर्ट मतलब बिल ऑफ एंट्री, एक्सपोर्ट शिपिंग बिल से आता है, डीटीएसएल बिल ऑफ एंट्री से आता है, डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब एचसीजेड टू यूयू सप्लाई से आता है, वो है. बट ये मेन रिपोर्ट का पर्पस इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ही है, ये जस्ट रेफरेंस के लिए है नीचे. बट आपका आई थिंक गिफ्ट यूनिट्स का कुछ कस्टम का है नहीं, तो रिलेवेंस भी उसका है नहीं. आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स के लिए फोकस कर सकते हो. बट जिनका बीओई है वो ऑटोमेटिकली पॉपअप होगा यहाँ पे, करेक्ट? जी जी करेक्ट. ओके, ठीक है. नाउ देन इफ यू हैव एनी सर्विस, आपके लिए यहाँ पे सर्विस एक्सपोर्ट्स ऑन साइट म्यूट हुआ रहता अभिषेक. So नीचे का section is for transactions if there are any which are filed offline, so that option is there. so but what I understood, it should capture the data which we have filed on DT procurement or DT services or SCRF. No? It is mentioned these are such transactions which are claimed by unit as exported but not filed through the system. कुछ issue है offline है तो ही है, so you can keep it blank. Okay. Oh, got it, sir. Okay. So यहाँ पे आप previous 3 system will allow you to just edit previous 3 months. उसके पहले का डेटा आप नहीं कर पाओगे. ठीक है. If at all you miss out in particular, let's say December month का आपने डेटा डाला नहीं, तो सिस्टम वही December month में जो था डेटा वही कैरी फॉरवर्ड करेगा Jan month के लिए. अब and if at all फिर आगे जाके आप वो Jan month के लिए आप एडिट कर सकते हो. बट मेक श्योर कि वो 3 मंथ्स के पहले, मतलब 3 मंथ्स का क्राइटेरिया में होना चाहिए. बिफोर दैट यू वोंट बी एबल टू एडिट एनी इंफॉर्मेशन. Once you've filled every detail, you can just go ahead and submit this form. Refer this note whenever you're doing this. Avinash, let me once share my screen. Sure, I'll just stop. So is my screen visible? Yes. Maybe. So if you file
monthly report, these employment and investment information is cumulative in nature. That is, at the end of last previous month, last date, what was the employment investment? It is not going to change frequently. So when it changes, you can capture. Otherwise, like this, carry forwarded system. If you will have to file it once, and if there is no change, system will keep on carry forwarding it. But if there are any changes, you can say you can go to January, February data last month which got updated. So you just click on update and change the details and submit it. Okay. Then here investment, you are talking some specific thing or Hello. hello? Yes. So here you are talking it is employment. This scheme is for employment and investment, correct? Correct. 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 So investment means what you are covering in investment here? So here there are this non-FDI in land, others, and FDI investment and investment Okay. proposed. Yeah, this part. Okay, got it. So Got it. system will, Thank you, sir. once you submit it, system will carry forward it automatically. But if there are any changes, you can just click on update and make change and submit again, and you Fine, will fine. get Got the it. status changed. Yeah. Okay, Thank Avinash, you, you sir. can continue. Okay, I'll just share my screen. So can you see my screen now? Yeah, ये दिख रहा है. Yes, we can see. Yeah. So this is the monthly MPR which we just covered. I'll take you to the APR information that you need to submit. Okay, before changing the user login and everything, I'll just show you the options available with the unit approval. So you can see the basic function inbox, search, reports, entity details is available. Except LOA जो पहला registration होने के बाद जो validation आता है आपको, मैंने बताया था 4 validations, तो एक्सेप्ट LOA करना पड़ता है यूनिट को, तो वो यहाँ यूनिट अप्रूवर के पास है. आपको SEZ एड्रेस कैप्चर करना है, यूनिट लीज का फंक्शन यहाँ पे हमने दिया है. This is for, and if you want to make AMC payments or top up payments, so you have to go to SEZ online account deposit, and if you do not know the account details and everything, it is available in this. Just let the page load. Yeah, so as you can see, your basic information is your entity ID and the balance which is available. Your AMC is when it's going to expire. So in this case, it's going to expire in November 2025. So the system will now not allow you to make any AMC payment right now. But you miss out, you forget to make the AMC payment. There are two ways you can do. One is if you have a sufficient balance. If you have sufficient balance, like in this case, there's 91,000 available, and you can select to pay the AMC amount from the balance. There is an option that will come here. You will get an option that to pay the AMC balance. This option I'm talking about, SEZ account deposit. So you can pay you can use this option, and 5,000 will be deducted from this balance, and your AMC will be removed. If you have to make top-up payment, you can just enter the amount, follow the declaration. You can enter your remarks which you want to pass, if any. The mode of making payment is through online payment gateway. You can do through NEFT RTGS also. And wait a minute.
So if you select NEFT RTGS option, people who want to, the units who want to make payment through NEFT and RTGS, bank detail not coming. You can select NEFT RTGS. Okay. So here you can see the bank details. You have to create a bank virtual ID, and we have given a IFSC code, and you can just make payment to our account. We have given an example how you can do it. Okay. So here is the payment making screen. And then once you click on I confirm, you select both the declaration and you click on pay. Here I've not entered the details. So just a minute. So today you make the payment. You click on pay. Just one question. Yeah. If you have not received the SEZ credentials after the fee payment also, तो हम किसे contact कर सकते हैं? मैम क्रेडेंशियल तो आपके पास रहता ही है, ठीक है. आप रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट, जस्ट अ मिनट, नाउ सी ऑन द स्क्रीन, कैन यू सी पॉपअप दैट इज कम mentioning your दिख रहा है. Yes. transaction ID. This is important. Transaction So ID. Yes. when you submitted the payment that you made to us, okay, you share this transaction ID also, so that it'll be easier for us to verify the payment that we have received. And once you approve it, then the payment is credited to your account. कितना टाइम में Okay. हो जाता है? ये इमीडिएटली, मतलब अगर आप जैसे तुरंत पेमेंट हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपने पेमेंट भी करके पेमेंट एंट्री भी पास किया, तो आई गेस इंस्टेंटेनियसली हो जाता है. Okay. हाँ, so now I'm coming back to your question. See, now you Yes. made a registration fee payment to us, ठीक है. जब भी आपने आप जब भी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तभी आपका एक एप्लीकेंट आईडी था, ठीक है. वही एप्लीकेंट आईडी से आपने वो पेमेंट हमें प्रोसेस की, और हमें जब भी पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया, ये जैसे अभी दिखाया स्क्रीन की, एक हाँ. ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता है, फिर हम वो वेरीफाई करते हैं पेमेंट एक्चुअल मिला है कि नहीं हमारे स्टेटमेंट में, एंड देन वी वेरीफाई दैट ट्रांजैक्शन. आप वही जो लॉगिन से आपने पेमेंट किए थे ना, हाँ. वही लॉगिन से आपको एक ऑप्शन आएगा, मेक मी एन एडमिन और मेक अ न्यू एडमिन. Okay. तो वो एडमिन आईडी, वो एप्लीकेंट आईडी गेट्स एन ऑप्शन टू बी एन एडमिन. अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप वो एक नया एडमिन आईडी भी क्रिएट कर सकते हो, और वो एडमिन आईडी से आप वो मेकर अप्रूवर क्रिएट कर सकते हो. बट एक्चुअली हमारे पास कोई क्रेडेंशियल्स, मतलब वो फर्स्ट इनिशियल पेमेंट जो नहीं होता है, उसके बाद ईमेल आता है, वो ही नहीं आया है. मैम कुछ रेफरेंस नहीं लग रहा आपको. यू आर टॉकिंग अबाउट रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट, राइट? Yes, yes, yes. Do you have any user ID, and do you have any registration application, any application ID? I have to confirm once. Yeah, so what you can do after the session, we can connect, and you can email me the details, and we can cross verify, and we can cross check, and we can help you out. ठीक है? Okay, okay. Thank you so much. Yeah. No sir. अभिषेक जी एक मिनट खाली, फैक्ट शीट एंड यूएसी एप्लीकेशन में एक भाई ने चेंज ऑफ डायरेक्टर फाइल कर दिया था. हाँ. हाँ, तो फ्री फॉर्म में फाइल करना है कि यहाँ पे फाइल करना है फैक्ट शीट में? चेंज ऑफ डायरेक्टर एंड चेंज ऑफ नेम और शेयर होल्डिंग पैटर्न.
Which module is live at present? आप एप्लीकेशन से कर सकते हो, यहाँ पे भी आप नोटिफाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ्री फॉर्म में करना, फ्री फॉर्म में एप्लीकेशन में करना है एंड यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। हाँ, यहाँ से भी कर सकते हो। Okay. So at presently, I think most of the units are using free form application. Admin में जाके they are filing the change of director and entrepreneur. They can do that and they can either do, but provided this has to be approved. Unit fact sheet से आप submit करके वो approve भी हो जाए। यहाँ से submit करो तो will it go to IFSCA? क्योंकि यहाँ पे most of the units are IFSCA. तो flow कैसा रहेगा? यहाँ से आप will go to the IFSCA users. But I guess आप free form से better कर सकते हो. This is just a क्योंकि इसका कोई notification आया नहीं unit fact sheet पहले I think you it'll have be to better first approve that the users will unit fact sheet पहले approve from कराना होता है। application से। हाँ, application से आप करोगे तो ही better है। हाँ, ये यूनिट फैक्ट शीट पहले अप्रूव कराना पड़ता है। इफ सपोज मान लो कि आपने ये लाइव कर दिया मॉड्यूल, नहीं मतलब लाइव किया है तो यूजर क्या कर सकता है, इसमें एग्जिस्टिंग डिटेल्स दिखा सकता है और एडिट करके वो ऐड भी कर सकता है एंड देन सबमिट करने के बाद वो अप्रूव जैसे हो जाता है, नोटेड करके, अगर डीसी ऑफिस ने नोटेड करके लिखा है तो वो चेंजेस अप्लाई हो जाता है। सिस्टम विल चेंज के फिर अथॉरिटी विल चेंज। यस, हाँ, जो चेंज आपने करवाया है वो चेंज इफेक्ट हो जाएगा। एक मिनट। हेलो अविनाश जी। हाँ बोलिए ना सर। एक्चुअली मेरा ये क्वेरी है कि मैंने एलओआई रिन्यूअल के लिए दिया था। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। तो एलओआई आईएफएससी की ओर से तो अप्रूवल आ चुका है, लेकिन एनएसडीएल की ओर से अभी बैकएंड में पेंडिंग है, तो सिस्टम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। आपका यूनिट का नाम क्या है सर? द इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, एफएमई। इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये आपका एग्जिस्टिंग एलओआई वाला है क्या केस? हाँ एग्जिस्टिंग है, मतलब कि एफएमई का अभी रिफ्लेक्ट हो गया है, लेकिन जो फंड है उसका नहीं हुआ है। अच्छा। और काफी टाइम से मतलब अभी एरर आ रही है। मेरे यज्ञेश भाई से बात हुआ था तो उन्होंने बताया था कि कुछ सिस्टम एरर है, लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। उसका करीब 3-4 महीने हो गए हैं, तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो ये सिस्टम एरर में अभी क्या कर सकते हैं हम? सर एक्चुअली टेक्निकली आप, मैं अगर बोलूँगा ना, तो अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आईएफएससी यूनिट है, आपका एलओ ऑलरेडी मिल चुका है और रजिस्ट्रेशन भी अप्रूव हो जाएगा, तो आपको एक्चुअली इसके लिए इशू कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अ मैटर कि आपको वो एलए पॉपुलेट नहीं हुआ है। करेक्ट। लेकिन दैट इज नॉट एन इशू। हाँ, हम कहीं पे भी रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा ना सर, मतलब डिटेल्स। बट अभी मैं आई कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। आईडी कार्ड के लिए, आईडी कार्ड के लिए आपको मतलब कैसे दिखाना पड़ता है कि आपको एलओ का स्क्रीनशॉट देना पड़ता है? मतलब वहां पे कोई रिन्यूअल डेट अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो फिर रिजेक्ट नहीं होगा क्या उसके लिए? ओके। सेकंड है कि फिर अगर कुछ भी मुझे रिन्यूअल के लिए करना है एलयूटी का, तो फिर कैसे करेगा उसमें बाद में? आप डायरेक्टली एलयूटी के लिए जा सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई गेस आपकी आप जो बोल रहे हैं कि आपका एलओए आपको सिस्टम पीडीएफ जो अप्रूव्ड हुआ है वो दिख रहा नहीं है, आपका यही पॉइंट है, राइट? हाँ, तो सर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, वी कैन गेट दैट अपडेटेड इन द सिस्टम आल्सो एंड दैट वोंट स्टॉप यू फ्रॉम फाइलिंग एनी अदर एप्लीकेशन। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है सिस्टम में। ठीक है, आप एलयूटी भी अपडेट कर सकते हो, आपका बाकी के इन्फॉर्मेशन भी आप डाल सकते हो, ऐसे कुछ इशू नहीं। अगर आपको तब भी डिफिकल्टी आती रहेगी, कुछ वैलिडेशन आती रहेंगे, तो आप मुझे बताओ, मैं चेक करके आपको अपडेट करता हूँ। अविनाश जी, जीएसटी अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, आगे में वो जो नंबर होता है ना स्टेट कोड, वो अपडेट नहीं करने दे रहा है और बोल रहा है कि हाँ, तो स्टेट कोड के लिए आपको बेसिकली लीज डीड अपडेट करना पड़ेगा, सिस्टम ये बताता रहेगा आपको।
और एलयूटी भी जनरेट नहीं हो पाएगा ना, न्यू एलयूटी जो होता है? नहीं, आपको पहला जीएसटी कैप्चर करना पड़ेगा, फिर जाके न्यू एलयूटी फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। बट ये केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लीज डीड बाद में सबमिट करना है तो आप डीसी को अप्रोच कर सकते हो। डीसी हैज द फैसिलिटी टू capture your GST and details, and then even they can update your SEZ address also. ऐसे कुछ नहीं। And then एक्चुअली में वेंडर ने बोला है कि मतलब डेवलपर ने बोला 1-2 दिन में दे देगा, तो मैं वेट कर लेता हूँ ना 1-2 दिन फिर ऐसे। हाँ ठीक है, तभी आप फिर उसके 1-2 दिन के बाद भी कर सकते हो ऐसा कुछ इशू नहीं। So should we go for question and answer session or like? सर एक मेरा क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर एसीआरएफ रिपोर्ट में हम लोग सब इनवॉइसेस अपलोड करते हैं। ओके। तो हाँ, तो उसी के अंदर अगर हमारा क्रेडिट नोट भी अपलोड करनी पड़ेगी ना? हाँ, क्रेडिट नोट डेबिट नोट मैंने उसमें दिखाया ना, आप कर सकते हो। कर सकते Yes, हैं sir, था उसमें. It was there. रिगार्डिंग या ओके, थैंक यू सर। Sir, APR form filing is pending still. Correct. I was going to that only, but the questions coming in. But this session is very, very helpful. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. सर BLUT का जरा थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा रिगार्डिंग दैट प्रीवियस सिग्नेटरीज कौन है ना सर। मैंने ऑलरेडी आपका एक ईमेल आईडी दे दीजिए तो डिटेल्स भेज देता हूं। हाँ, ये सेशन के बाद है ना, ये सेशन के बाद आई विल गो बैक टू द पीपीटी एंड आई विल शो यू द कांटेक्ट डिटेल्स। अब मेरा भी मैं ईमेल एड्रेस बता दूंगा, यू कैन जस्ट लूप मी इनटू दोस ईमेल आईडीज। ठीक। हाँ, सो दिस इज द एपीआर फॉर्म। एज आई सेड कि आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का एपीआर, ये मतलब से 24-25 का APR financial year का APR you will have to submit it to the DC office before September 2025, the next financial second quarter तक। यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन आपका रहता है, आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए रिपोर्ट कर रहे हो, लास्ट ईयर का 2024। इफ इट्स अ फुल और पार्ट you can capture that. Mostly users take for full. Make sure that the API that you're submitting is authenticated, is certified by your chartered accountant. यहाँ पे आपको कंपनी का वेबसाइट, यहाँ पे I'll just put in a done। ठीक है, आपका कांटेक्ट पर्सन के नेम एंड एड्रेस डिटेल्स, यूनिट का ईमेल, कांटेक्ट पर्सन का ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आपने जो एलओए के टाइम पे जो आइटम्स या सर्विसेज मेंशन किए थे वही आपको यहाँ पे कैप्चर दिखेंगे। It's not actually it's showing the current financial year, and I don't have any other user that is going to just hold, stay on the line. अविनाश जी, सॉरी, आई हैड अ कॉल फ्रॉम मिस्टर जॉर्ज। वुमेन्स डे सेलिब्रेशन का था ब्रिगेड में 10th को। बोलिए सर। प्रकाश जी एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछिए। ये बताइए, हमने अभी एसईजेड के लिए वो जो रिन्यूअल फीस है वो पे कर दिया है, बट हमारा सर्विस अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। रिन्यूअल क्या कर दिया आपने? रिन्यूअल जो एनुअल फीस है ना वो पे कर दिया है। ठीक है, इसका एसईजेड ऑनलाइन ना के? हाँ एसईजेड ऑनलाइन का। तो अभी वो दिखाया ना आपको, वो एक ट्रांजैक्शन कोड मेल करना होता है और उन्होंने बोला कि इमीडिएटली जैसे आप मेल करोगे तो इट विल बी अप्रूव्ड। सब कुछ मेल कर दिया, नहीं सब कुछ मेल तो कर दिया है, बट अभी जो ये है क्या एरर मैसेज जो आ रहा है ना,
हाँ वो बोलिए ना मेरे सर। हमारे मेरे ईमेल इनका आईडी पे पेमेंट अभी तक फॉरवर्ड अप्रूव करो नहीं है, ना, ऐसा बोल रही अर्जेंटली है। देखता हूँ मैं। प्रकाश जी मेरा ईमेल आईडी दे दीजिए ना, मैं चेक कर लेता हूँ ये पेमेंट। ऑलरेडी गिवन इन द चैट बॉक्स, उनको मेल डायरेक्टली कर दीजिए सर। ठीक। ईमेल आईडी क्या है? अरे एक मिनट, वापिस से चैट बॉक्स में डाल दो ना सर। मैं डाल रहा हूँ रुको। ओके। हेलो। पूर्ण फॉर्म टैब्स नाही मला ते होत नाही, मी ते हाँ सो अभिषेक जी, हैव यू कंप्लीट? प्रकाश जी आई गेस एपीआर का फॉर्म बाकी है, वो जस्ट मैं कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। Another 5 to 10 minutes. Just I've mentioned my email ID. You can write it to me. Can you share phone number also देख right लेना। now, sir? I'll share it on the slide also, ma'am. Just a little bit, please. I'll just Okay, complete no, this no APR issues. form and I'll, yeah. Just a minute. I'll just complete this APR form. Then you can go for right question and अभिषेक जी, answers. दिस विल बी द लास्ट, क्योंकि फिर अब सबको जाना है एंड वी विल अगेन शेड्यूल इन द नेक्स्ट वीक फॉर फ्री फॉर्म एप्लीकेशंस चेंज, और ये एक और था मैं भूल गया, लॉगिन थ्रू टैब, चेंज ऑफ प्रीमाइसेस के लिए। यस, चेंज ऑफ प्रीमाइसेस एंड मैंने जो पहले बताया वो दो मॉड्यूल अपने नेक्स्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि मैनी यूनिट्स विल बी रीलोकेटेड। हमारे एक बिल्डिंग जो है वहां से वी हैव इंटीमेटेड यूनिट टू शिफ्ट टू परमानेंट प्रीमाइसेस, तो बहुत सारा एप्लीकेशन आएगा करने का। सर इसका रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे सबको प्लीज। आई थिंक ये 3 घंटे का रिकॉर्डिंग तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कहीं पे भी शेयर हो सके। ऑलरेडी पुराने रिकॉर्डिंग से यू कैन यूज इट। But thank you, sir. This is very helpful. हाँ, यस, वेरी हेल्पफुल फॉर द न्यू एंड जिन्होंने डीएसपीएफ विल ट्राई के जो डीएसपीएफ है ये फर्स्ट टाइम हुआ है इतना डिटेल में डीएसपीएफ है डीटीए I'll प्रोक्योरमेंट। just, in short, I'll just cover the tabs, just 4 tabs, okay? And then we can just go for question and answers and close the session, okay? Yeah. So, as I was saying, financial year, you can select which financial year you want to submit your APR, okay? And then basic information is already available. You can then you just have to mention your company address, email, sorry, website, contact person name, number, and email address. Your item, your services will be auto-populated based on your LOA, मतलब आपने जो LOA में आपने items डाले थे, services mention किए थे, वही आपको auto-populated यहाँ पे दिखाई देंगे. This has to be selected that you are whatever the APR that you're submitting is confirmed or certified by your chartered accountant. Okay, once you save this, I think this is already saved. तो यहाँ पे नेक्स्ट ऐप पे आपको जैसे आप जनरल डिटेल्स आप सेव कर देते हो तो नेक्स्ट ऐप ओपन हो जाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट डिटेल्स ऐड डॉक्यूमेंट। हियर यू कैन सी आपने आपके जो भी एक्सपोर्ट्स है आपको यहाँ पे कैप्चर करना है, या ये सिस्टम आपने जितने भी अप्रूव्ड है मतलब सिस्टम में कैलकुलेट करके डालती है। अगर इसमें आपको कुछ वेरिएशंस है तो आप मैन्युअली भी एंटर कर सकते हो। कंट्री वाइज आपको इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे कैप्चर करना है। I am not going into detail because we have already crossed like 1.5 hour. I'll just try to glance you over this and maybe in the next session and we can go a little bit more detail. यहाँ पे हाँ, in case you have any confusion about the calculation process and everything, you can go to download section. यहाँ पे हमारा manual है APR का annual performance report. You can go through this manual also. This is it has the same detail, same informations कि आपको कैसे कैप्चर करना है, कैलकुलेशंस कैसे होता है,
यहाँ पे सारा डिटेल्स हमने बता के रखा है. आई एम जस्ट टेकिंग यू ओवर how the tabs look, what information is required where, क्या कैप्चर है. यहाँ पे मैंडेटरी इंफॉर्मेशन लाइक आपका अगर इंपोर्ट है तो इंपोर्ट का आउटफ्लो आपको यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करने पड़ रहे हैं. गुड्स एंड सर्विसेज, आपको अगर सर्विसेज है तो आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो इन इंडियन करेंसी, फॉरेन करेंसी. BLUT डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर करना. डायरेक्ट नेक्स्ट टैब, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स. आपके इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, बिल्डिंग के इन्वेस्टमेंट्स कितने, इन लैक्स यू हैव टू कैप्चर. प्लांट एंड मशीनरीज अगर आपका, सो आई गेस IFSC यूनिट्स आपको सब बिल्डिंग का रहेगा, ये रहेगा इंडिजीनियस गुड्स, इंपोर्ट्स हियर, एंड यू विल हैव टू कैप्चर द डिटेल्स. If any payment which is not yet realized, you have to capture it here. Cases of pending foreign exchange realization beyond permitted period. मतलब कोई फॉरेन एक्सचेंज आपको मिला नहीं, ये है. तो यहाँ पे आपको डिटेल्स कैप्चर करना कि कहाँ कब एक्सपोर्ट हुआ था, इंपोर्टर कौन है, एड्रेस क्या है उसका, कंट्री कौन सा है, एंड द वैल्यू. And then add supporting necessary documents and submit this APR form to the DC office and get it approved. जैसे अप्रूव हो जाता है तो आपका APR फॉर्म सबमिट मतलब इज वैलिडेटेड इन सेज ऑनलाइन सिस्टम. अप्रोक्सीमेट इसमें कितना टाइम लगता है सबमिशन के बाद में? 1 month, 2 months, because there will be so many forms for the DC to approve. I know, correct? ma'am, but currently, see that depends basically. आपको you will have to approach the DC office and get आपके follow up के ऊपर depend होता है. Ma'am, we are here till कि आपको submission के टाइम पे आपको जो भी issues आते रहेंगे, we are there. Submission के बाद का जो process है that's on you. And you will have to approach the DC office if they have any queries regarding your physical values that you have mentioned. They can raise a query for that. Then you will have to address that query. And do we need to submit the physical copies also to the DC office? Depends if they require, if they want you to submit it, then you will have to. Fine, thank you. Yeah. Right now it is there available. This form is available online, so you can submit it online. If they want to, yes. The DC asks, you can submit the same. Sure. Okay. Yeah, we can go ahead with the question and answer session. Sir, one suggestion for the sessions. If we can have a series of short sessions for each form, that would go in detail. This was actually very helpful. So when we are planning to have a similar kind of thing next week, maybe a series of each what form. You can do, what I can do is I'll just contact Prakash ji and we can have a detailed session about it. Okay, so here is a contact number. So sorry, here is the contact. Zoom कर दीजिए sir. They can take the screenshot, photo ले लो. दिख रहा है? हाँ, ग्रुप में डालो, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ. ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए ये मेरा email address है. Okay, this is and this is Abhishek sir's email address. You can write if your issues are not addressed in time or there's some pendency happening. You can just write it to us. We can look. सर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ हमारे, तो वहाँ पे भी आपको. I know. फिर तो फोन बजते ही बैठेगा सर. राइट. या अभी ये मेरे हाँ. अरे हमारे सर आवाज टूट रहा है आपका वॉइस ब्रेक हो गया. यूनिट में को एक हमारे यूनिट में नए डायरेक्टर ऐड हुए हैं. तो हम पोर्टल पे कैसे ऐड करें उसे? हाँ, तो जैसे एक मिनट एप्लीकेशंस करके मैंने प्रकाश जी शायद से बोल रहे थे, मैं और ये प्रकाश जी जस्ट डिस्कस कर रहे थे थोड़े टाइम पहले. तो एक एप्लीकेशन यूनिट मेकर में एक एप्लीकेशन करके लिंक है. एप्लीकेशन फ्री प्रोम से करना होगा.
हाँ यस सर, एप्लीकेशंस का दूसरा नाम हम लोग जो यूज करते हैं वो फ्री फॉर्म है, ठीक है। ओके ओके, through this you can ओके add, you can mention the directed detail that you got to change, and this form we will submit. I'll go to the DC office and the DC office will verify it and they'll update it. एप्लीकेशन में से जो से करना होगा या एडमिन अदर में ऐसे? किसमें एडमिन में हाँ ये चेंज ऑफ डायरेक्टर ऑनलाइन में फाइल करो फ्री फॉर्म में। मुझे दिखा नहीं था सर। एडमिन में जाके, ओके एडमिन में जाते हो तो यहाँ पे चेंज ऑफ एंटरप्रेन्योर शेयर होल्डिंग पैटर्न, दिस इज द ओनली मॉडल एट प्रेजेंटली अवेलेबल। इसके अंदर आई थिंक मेनी ऑफ द यूनिट्स है फाइल्ड एंड इफका ने अप्रूव भी किया है। एम आई राइट रोहित जी? रोहित जी हैं क्या अभी? एनीबॉडी जिसने ये फाइल की और अप्रूव किया हो? अच्छा 5 और छोड़ दो पूछ लो। Hi, have you reached guest house? Okay, fine, no issues. मैम अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछो तो म्यूट कर लीजिए। एंड तो हमें अभी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं हुआ है एंड एक साथ तो एलो एक्सटेंशन करना पड़ेगा या फिर हाँ एलो एक्सटेंशन करना पड़ेगा आपको। डीसीपी नहीं हुआ तो आपको एक्सटेंड कराना पड़ेगा डीसी ऑफिस। तो यहाँ पे वो दूसरा मॉड्यूल मैंने जो बताया ना एलो के लिंक में, एलो एक्सटेंशन, यू विल हैव टू फाइल एलो एक्सटेंशन एंड सबमिट टू द डीसी ऑफिस। एंड डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने पड़ेंगे? सर आप डीसी ऑफिस को एक बार पूछ लो उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। Okay. Yeah. There is a module available that you can file an extension also. Excuse me, sir. Hello, am I audible? Yeah. There is one change in PIN code which has taken place for GIFT City. So, are we supposed to change the PIN code of the entity in SEZ accordingly? Because we have one notification also coming. अगर आपके एड्रेस को ये चेंज कर रहा है तो आपको करना पड़ेगा। आपको you can approach the DC office and add that PIN code. यही मॉड्यूल है एडमिन चेंज ऑफ नहीं पर कौन सा अदर्स में अदर्स सिलेक्ट कर लो। अदर्स में जाना अदर्स ले पड़ेगा लो। हाँ अदर्स सिलेक्ट करके सेव करो तो वहाँ पे चेंज ऑफ पिन कोड आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। Yeah, you can just mention the detail what it is and then you can go ahead and submit it. Simple. Okay, here we have to request for the change in PIN code. Yeah. If you want to, yes. If you want, if it's effective. Okay. Yes, because that is applicable for all the units, I think. So that new PIN code. Yeah, you can do that. You can use a form. So. Okay, so we have to upload the memo or notification which is received from the postal department. You can upload. Yes, you can upload. You can upload. There's an upload function also here. You can see upload file template. You can upload the file. Okay. Thanks a lot. Awesome. I hope this session was very useful to all of you. Maybe in future we can get in detail also. We can. I'll just show you. Sorry. These are our numbers. This is my email address, my mobile number, my landline number. This is Abhishek's mobile number, landline number, email address. You can reach out to us. हमारा helpdesk email is ndmail.in. Anybody from Briefly? I think Briefly has not joined. The training session में join होते नहीं many units and then they keep on sending the mails. उनको directly फिर mail करने ही बोलो हमें. Directly mail पे solve कर देंगे. मैंने उनको बोला है join हो जाना training session में. Nobody is from Briefly. Anybody from Briefly? बेला जी. I'll just copy this and put it in chat. हाँ, yeah, okay. Says online training. Yeah. यहाँ पे chat में मैंने डाल दी है help desk का भी, मेरा भी, ठीक है? Right. So you can just reach out. Okay. This is again I'm saying this is my email address, my mobile number,
अगर फोन मैं लैंडलाइन नहीं उठाता हो तो अब मुझे मोबाइल पे ट्राई कीजिए, मोबाइल नहीं उठाता तो मुझे यही नंबर मेरा व्हाट्सएप है, और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। I'll definitely reply you on WhatsApp. This is my email also, you can drop me an email. ठीक है? तो Okay sir, can we? हाँ, ऑलरेडी 1 घंटे की जगह 2.5 घंटे हो गया, मोर देन 2.5 घंटा। I know बहुत ज्यादा टाइम हो गया। So we will not take the most, मतलब there are many units जिसका क्वेश्चन आया नहीं है, we will take a next session in this month only, तो उसके अंदर we will try to cover the same, otherwise मैं हूँ यहाँ पे, मिस्टर रौनक भाई है, you can come down to gift house and we can have 1-to-1 session, if आपका कोई भी हो तो we can solve the same। योगेश जी भी रहेंगे, अगर मैं नहीं हूँ तो योगेश जी है, रौनक जी है। So thank you all for joining, we end the session over here, thank you Thank you sir. Abhishek ji, Yes sir. Avinash ji, it was Thank you sir. very nicely explained, I think सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेनली बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे DSPF एंड DTA प्रोक्योरमेंट, इस बार इट हैज बीन कवर्ड। थैंक यू सर। Yes, thank you sir, thank you so much।